एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट थाउजेंड्स ऑफ करोड़। वो सरकार से भी नहीं आई, वो खुद से भी नहीं, उन्होंने यहाँ से कंपनी सेट की और वहाँ की एक फॉरेन अमेरिकन कंपनी को उसके साथ एसोसिएट किया। और एफडीआई में हमारे स्पेस को लेकर कुछ एक ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनमें 100% एग्जेम्पशन है, कुछ ज़्यादा सेंसिटिव उससे 70% है, उस तरह से कैपिंग किया हुआ, वहाँ से लगवा के किया। सो वी आर ओपनिंग अप द पूल, दैट इज हाउ, एंड दैट इज द ओनली वे वी कैन प्रोग्रेस। सर वैक्सीन में भी our vaccine has given us global success. DNA एक ऐसा मुल्क है, इसी what may be of interest to the media persons is India was never taken seriously for its health practices. अगर बीमारी पड़ जाओ 3-4 दिन देखेंगे, अगर ठीक हो गए तो माँ का आशीर्वाद, नहीं ठीक हुए पिछले जन्म का कर्म। तो ये होममेड प्लेसिबोस हमारे सिखाया क्या? हाथों की लकीरों का सवाल है। आज वही मुल्क is being hailed as a leader in preventive medicine. Yani a country which was, dismissed off as a therapeutic practices is being hailed for preventive medicine. पहला DNA वैक्सीन हमने बनाया 30 कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जो मिशन मैत्री था, and now we have a lineup of vaccines. You want to add? वैक्सीन इंडस्ट्री, जैसे आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वैक्सीन और इन्फेक्शियस डिजीजेस कम थ्रू इंडिया। तो मैन्युफैक्चरिंग स्केल एंड कैपेसिटी जो लास्ट 10 साल में बना है अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब इट्स नेवर एवर एनी नो अदर कंट्री हैज बीन एबल टू मैच द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये सारे वैक्सीन्स ने सिटीजन को टच किया है, बल्कि उसको प्रिंट किया है। टारगेट में ने जो कोविड दोबारा नहीं हो सकता है, वो अलग बात है। सर, this is Aparna from Press Trust of India. My question is regarding the pollution follow-up question actually. We are seeing more interventions now with regards to pollution. We have seen this clean mobility scheme. We are also seeing e-trucks now, e-tractors now. But I want to understand, what about e-trucks? Because we understand that trucks are the one of the most polluting vehicles. Are there any engineering or structural hurdles when it comes to e-trucks? Though you are asking about e-trucks, maybe e-trucks may take little more time for the storage related aspects, because e-tractor is small, e-trucks are big. But country is going to announce one more mission which is called the Carbon Capture and Utilization Mission, CCUS mission, under which maybe the CO2 that is getting emitted from these trucks, that itself could be absorbed and desorbed, so that when the truck is reaching a particular place, instead of allowing the CO2 to reach the atmosphere, can we get it absorbed in the kind of a cylinders and the columns that will occupy a small space in the truck itself, and we will have two columns, one for absorption, another one for desorption, so that when the truck driver is finally reaching his destination, he can even just give it as a some amount of liquid CO2 for the carbonated CO2. To that level, we have plans. Once that mission is announced, we may be able to come up with some kind of a technology leads with respect to trucks. Just one follow-up. When can we expect such interventions? Ma'am, it is yet to be announced. The mission is yet to be announced, but across the globe there is only one model called Remura model. So it is halfway through. That is, but we believe that at lab level we have received some kind of a very encouraging results, and therefore we think that it is doable in India. Vehicles, the scaling up has not happened so much because the government was very keen. Also because we could inspire interest of the private players. You have small, even in the city of Delhi, you have small groups of youngsters who have made a good fortune out of this. Because in Delhi, I believe there is a traffic rule. After September, here the auto rickshaw has to be abandoned because that engine starts emanating. So what these boys started doing is, they started approaching the auto rickshaw owners and prompting them not to dispose of and go in for a new one, because that will be implying certain cost. They said, you give it to us, we'll take out your engine and put batteries inside. So that itself has become a huge new vocation of livelihood. Yes? Sir, आपने अभी vaccines के बारे में बात की. I wanted to ask, there was a vaccine for HPV developed with the support of DBT,
Why is that not being used in our national program? And second question, space sector related hai. It has been several months since we've seen a launch. What will the calendar look like? चाहे वो private sector में हो या ISRO के through launches हो. The private sector तो हमारा हुआ. We are now again going to have another private sector launch by Skyroot again this unicorn very shortly. That satellite and the BSNV we are planning maybe by the end of June or beginning of July because that series got interrupted. And of course our Gaganyaan got delayed for a number of reasons. First, we had planned for 2022 that the COVID came, these astronauts were ready, Gregory Institute in Moscow that would be called back. Then one thing, because see what happens is, unfortunately, once a date is missed in space, you can't fix your other date. I mean, it's not that suddenly you work as a taker. It has to be fixed by the stars, like marriage is made in heaven. You have to wait for the next configuration to occur. The whole thing goes haywire. So that's how now, but we hope to complete all the test flights before the year end, including the Opal. That's going to be our most ambitious one. And what is the other thing? HP, Selvovac. Yeah, they are already with the private customers. I think the Serovac was 2-dose vaccine, whereas the Merck's vaccine is a single-dose vaccine. That is why it was initially launched, but the Serovac will also come. So it will be, because the number of doses has to be clinically tested. So the data has to be, cannot be post hoc analysis. So small trial would be done and then it's going on. I think the post hoc analysis, what you call, you can also do retrospective analysis of data, so that may also work. But this will take about a year time to finish. You can't do retrospective. The validation is very important to us. Not only for credibility, because we are also dealing with the human life. So what they have to now establish what is more efficacious. Yes, yes. सर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से चंद्रयान सफलता के बाद सरकार विज्ञान संचार पर क्या कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाएगी आगे जाकर के? इसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे चंद्रयान 3 की सफलता के बाद विज्ञान संचार पर विज्ञान संचार अंतरिक्ष में कि वैसे आप कह रहे हैं? वैसे नॉर्मल वैसे तो हमारी ये सारी अभी जो इन्होंने DSTT बताया उसमें हमारा नेशनल क्वांटम मिशन है 2023 में लॉन्च किया गया था 8 साल के लिए, लेकिन हमने जो आधे टारगेट थे जो 4 साल के बाद अपेक्षित थे वो पहले अचीव कर लिए। उदाहरण के तौर पर उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसर्स, क्वांटम मटीरियल। क्वांटम कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी की दृष्टि से, एनक्रिप्टेड मैसेजेस की दृष्टि से, मीडिया की दृष्टि से। उसमें हमने अपना टारगेट रखा था 2000 स्क्वायर मीटर 2000 किलोमीटर सिक्योर कम्युनिकेशन एट द एंड ऑफ 8 इयर्स, लेकिन हम 1000 3 साल में प्राप्त करने में सफल हो गए, यानी हाफ द टारगेट वाज अचीव बिफोर हाफ द पीरियड। तो हम काफी तेजी से उसमें प्रगति कर रहे हैं। इस तरह से हमारा AI मिशन अलग चल रहा है, इसी तरह से हमारे साइबर सिक्योरिटी का मिशन अलग से, 3-4 मिशन मोड पर काम चल रहे हैं हमारे। उससे क्या हुआ कि हम एक ही कतार में खड़े हैं, किसी देश से पीछे नहीं है उस मामले में। इनफैक्ट हमारा AI का जो डेटा बनेगा वो बाकी देशों से बहुत विस्तृत होगा, बड़ा व्यापक होगा, बिकॉज हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसमें 22 तो भाषाएं हैं जो 8 शेड्यूल की है, उसके अतिरिक्त तो वो भाषाएं जो बोली जाती है। और इसलिए हमारे प्राइवेट प्लेयर्स बहुत एक्टिव हुए। कुछ एक ऐसे प्राइवेट स्टार्टअप ग्रुप्स है, उन्होंने 22 भाषाओं का किया ही नहीं, उन्होंने वो किया जो धरती में बोली जाती है। क्योंकि टेलीमेडिसिन में अगर आप जाएंगे किसी बस्ती में इलाज करने तो भोजपुरी बोल रहा है तो उसको क्या लेना देना कि 8 शेड्यूल में क्या, उसकी भाषा चाहिए। तो इसलिए हमारा पूल बहुत बड़ा है, होने वाला है। हेलो जी, नमस्कार सर, Pallab Bagla, science editor NDTV. 2 short questions and 1 comment, sir. If I'm not wrong, Dr. Singh, you had a brief run of 12 years as science minister, probably the longest of a science minister. No, Pallab, are you my friend or enemy? Then you can decide that. Depending on what story I do, you will decide every morning. One question for you. In these 12 years, is there one regret you have, something which you wanted to do and could not do?
No, I think it was this opening up to the private sector was one of the biggest breakthroughs. Uh, and I'm glad and thankful the Prime Minister enabled us to do so. If we had done it earlier, we could have progressed even faster. But obviously, to come out of that earlier mode and that package of 6 decades took time. Like I said, the 5 years progress in space is phenomenal, phenomenal. And similarly also in biotechnology, we put up this BIRAC, the interface. And now we are also in a position to say that space economy, bioeconomy are going to be important components in overall economic growth of the Sir, country. I asked for Otherwise, it regret. will be periphery. Sir, I asked for one regret which you wanted to do and could not do. You've given me still what you could do. I could not satisfy Pallav. 12 years of and that regret is retreating even today in this room. And the second question I had, sir, and this is a political question. Don't carry it to Dr. Gokhale. Prime Minister wants Atmanirbharta, and one area where we need Atmanirbharta is edible oil. $18.3 billion we are spending to get 16 million tons of edible oil. Gokhale's department has a solution. It's a political decision which for some reason you are not able to push through. I'm talking of the GM mustard from Dr. Deepak Painter's office. Any reason why you are not able to push it through? I think the safe answer is that we are not directly dealing with this issue. I think we develop technologies and then the Yes. implementation part is done by agriculture Yes, so and the Ministry of Environment and Health. You will, it will come back to haunt you. And why don't you do a cost-benefit analysis of what has been put in? This is a comment, sir. That's Why what don't you put in a cost-benefit that's like what he's space saying, jet? that is for the agriculture ministry. No, I'm not talking of mustard, but I'm talking of science and technology in general. Like space did, a rupee spent and they get 2.7 back for the MOSP. Maybe you can do it for next year. Okay, well taken. राइट जैसा मेरे 2 सवाल हैं। एक तो पहले जो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप लोगों के नेतृत्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विजिबल इम्पैक्ट प्रस्तुत किया है, विश्व स्तर पर जो है सराहना हो रही है। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन है स्पेस क्षेत्र से हमारे 2 जो PSLV हमारे लॉन्च व्हीकल्स थे, बहुत टाइम टेस्टेड और बहुत लंबा परफॉर्मेंस होता है, लेकिन पिछले 2 बार लगातार 2 हमारी फेलियर हुई। तो उसका जो है उसके जांच हुई होगी आपके पास, और क्या इस तरह अगला जो है जो उसका हमारा चंद्रयान पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लियर एनर्जी से शांति मिशन, शांति एक्ट हमारा पास हो चुका है, तो क्या हम न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से और रिन्यूएबल के माध्यम से जो हमारी ऑयल डिपेंडेंसी है उसको हम मॉड्यूलर रिएक्टर से जो है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके। जैसे PSLV का आपने उल्लेख किया, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि 2 बार उस तरह की सफलता प्राप्त नहीं हुई जिस तरह से हमें अपेक्षा थी। स्पेस के सेक्टर में फेलियर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि डिले इज ए चैलेंज, और अगर हम स्टैटिस्टिकली फेलियर ही देखें तो हमारा फेलियर रेट इज वेरी लो कंपेयर टू USA एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। लाइक हमारा पहला चंद्रयान पहली अटेम्प्ट में गया, हमारा मंगलयान पहली अटेम्प्ट में गया, उनकी 3 अटेम्प्ट्स लगी रहती है। हमारे चंद्रयान के साथ ही रशिया का गया तो वो अपना टारगेट तक नहीं पहुंच सका। So failure तो नहीं है, because ये these are new experiences, so you are always ready to come across certain experiences which you may not have foreseen and which may cause disruption in your further plan or reaching the target that you have we say aside for yourself। तो उस तरह से हुआ, लेकिन हाँ उसका आंकलन किया गया, वो जहाँ पे कोई कमी पेशी रह गई थी उसका समझ लिया गया है, उसकी पहचान भी हो गई है, और इसलिए अब अगले
लॉन्च की तैयारी हो रही है। मुझे लग रहा है कि जून के माह के अंत तक या अगले महीने तक हम वो कर पाएंगे। और जहाँ तक शांति एक्ट का ताल्लुक है, बिल्कुल